Assalamu alaikum students, this is our fourth lecture on chapter number 2, which is binary system. In binary system you have already studied about that we deals with two things, and that is either true or false. Now we will move towards the laws of Boolean algebra. First of all, you can see over here that our first law is of commutative law. Commutative law, distributive law, associative law, ये सारे वही laws हैं जो आप मैथ्स में पहले भी पढ़ चुके हो. Now we will discuss in detail about commutative law over here. So the statement of commutative law is this: the order of application of two separate preposition is not important. Statement में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर आपके पास दो prepositions हैं तो जो उनका order होगा, main thing is the order, जो उनका order होगा, it doesn't matter, या वो important नहीं है कि आप पहले कौन सी preposition लिखते हो. Means to say that if you are having two preposition, let's suppose A and B, तो अगर आप A प्रपोजिशन पहले लिखो या B पहले लिखो तो आपका दोनों केसेस में आंसर सेम आना चाहिए. सो वी विल प्रूव दिस स्टेटमेंट बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल्स. वी आर हैविंग टू इक्वेशंस ओवर हियर. और एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप लॉज की बात करोगे तो लॉज के अंदर आप सिर्फ दो गेट्स के साथ डील करोगे, ईदर विथ डॉट ऑपरेटर दैट इज एंड गेट, या फिर आप और ऑपरेटर के साथ डील करोगे, प्लस के साइन के साथ आप डील करोगे. ठीक है, तो यहाँ जो दो इक्वेशंस लिखी गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ डॉट और एंड को ही देखते हुए लिखी गई हैं. मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट इक्वेशन, वी कैन सी ओवर हियर दैट A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A. मतलब ये कि अगर A प्रपोजिशन को मैं पहले लिखती हूँ और B को मैं बाद में लिखती हूँ तो मेरा आंसर उस केस में भी वही आना चाहिए जो मेरा आंसर आएगा B डॉट A के केस में. सो you can see the truth table over here. For A column I have written true, true, false and false. For B I have written true, false, true, false. For A dot B, now we will evaluate A dot B. A dot B में आ डॉट ऑपरेटर क्या करता है, एंड का ऑपरेटर किस वक्त काम करता है, कब आंसर आपका ट्रू आता है, जब आपकी दोनों इनपुट्स ट्रू हो. फॉर A and B both, अगर दोनों इनपुट्स आपकी ट्रू होंगी then your answer will be true. So you can see over here that for we were having true for A and true for B, so our answer is true over here. अब बाकी सारे तीनों नीचे केसेस में आप देखोगे कि तीनों में एक एक फॉल्स है आपके पास, यहाँ पर भी एक फॉल्स है, वहां भी फॉल्स और फॉल्स है. तो इन तीनों के केस में आपका आंसर जो है वो फॉल्स आ रहा है, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स. नाउ मूविंग टुवर्ड्स B डॉट A, पहले हम B को लिखेंगे और फिर हम A को एवेल्युएट करेंगे. तो B डॉट A को जब हम एवेल्युएट करेंगे तब भी हमारे पास पहले केस में दोनों में ट्रू है तो हमारा आंसर ट्रू है, रेस्ट ऑफ द केसेस आवर आंसर इज फॉल्स. ठीक है. नाउ for second gate you can see over here that there is true, false, false and false, and true, false and false and false. So in both cases left hand side is equal to right hand side. We can say that A dot B is equal to B dot A. Okay, now moving towards OR operator. For OR you can see that first of all we have made a column of A, then of B, then A plus B what we want, या what is our requirement, then B plus A. अब प्लस की हम बात कर रहे हैं तो प्लस का मतलब होता है आपका और ऑपरेटर, और गेट की हम बात कर रहे हैं. तो और में क्या होता है कि अगर दोनों इनपुट्स में से कोई एक इनपुट भी ट्रू हो तो आपका आंसर ट्रू हो जाता है. सो यहाँ पर फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, योर आंसर विल बी ट्रू. यहाँ पर एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, उसे एक भी अगर ट्रू मिल जाएगा तो आंसर आपका ट्रू हो जाएगा, देन आवर आंसर इज ट्रू. For third case, false, true, true. For fourth case, when there is both false, both the inputs are false, then your answer will be false. This is for the case A plus B. पहले हम A को solve कर रहे हैं और फिर हम B को solve कर रहे हैं. Next case is B plus A. B plus A की जब हम बात करते हैं तो पहले हम B को solve करेंगे, फिर हम A की तरफ जाएंगे. तो B को हम देखें, first input is true, second is false, true and false. तो B के अंदर हम पहले ट्रू और A लेंगे यहाँ से, तो ट्रू, बोथ इनपुट्स आर ट्रू और आंसर विल बी ट्रू. नाउ फॉल्स, ट्रू, देयर इज वन इनपुट दैट इज ट्रू, सो आवर आंसर विल बी ट्रू. देयर इज ट्रू एंड फॉल्स, आवर आंसर विल बी ट्रू बिकॉज देयर इज वन ट्रू. फॉर लास्ट केस बोथ द इनपुट्स आर फॉल्स, सो आवर आंसर इज फॉल्स. Hence we can see over here that for A plus B our answer is true, 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 false. And for B plus A we are having true, 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 false. So in both cases our answer is same. So we can say that left hand side is equal to right hand side, or we can say that A plus B is equal to B plus A.
This was all about commutative law. In our next video, we will explain about associative law and distributive law, identity law. That is all. Assalamualaikum students, this is our fourth video on chapter number 2 and it is the second part of our fourth video. It's on page number 48. Previously we were discussing about commutative laws and this is our second law, that is associative law. This is the laws of Boolean algebra. Moving towards the statement of associative law, you can see over here that there is no change in results if a grouping of expression is changed. इसका मतलब क्या हुआ? वो कहते हैं कि रिजल्ट पर कोई चेंज नहीं आना चाहिए अगर हम एक्सप्रेशन की जो ग्रुपिंग है उन्हें चेंज करें. What is meant by the grouping of expression means to say that if I have written a plus b in the bracket in left hand side and I have written b plus c in the right hand side, then answer should be same. Let's suppose this is the first equation. This is the first equation and we have to prove this by using associative law over here. So for the case of OR gate for plus आपको पता है ये OR gate होता है. और के लिए मैं यहाँ पर मैंने ट्रुथ टेबल बनाया हुआ है एंड आई विल एक्सप्लेन दिस ट्रुथ टेबल. फॉर एंड ऑपरेटर यू हैव टू सॉल्व दिस एट योर होम्स फॉर अ होम असाइनमेंट. ओके, नाउ वी विल प्रूव दिस लॉ और यू कैन से दिस इक्वेशन बाय यूजिंग द एसोसिएटिव लॉ. अब a प्लस बी ब्रैकेट्स प्लस सी दैट शुड बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. इसके लिए मुझे सबसे पहले मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है वेरिएबल्स. मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं a b एंड c. अब a b c 3 वेरिएबल्स यहाँ पर है. उसके बाद मैंने देखना है मेरी रिक्वायरमेंट में नेक्स्ट क्या चीज है. नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी है तो मैं यहाँ पर a प्लस बी का कॉलम बनाऊंगी. उसके बाद मैं अपनी राइट हैंड साइड में देखूंगी कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है. राइट हैंड साइड में मेरे पास b प्लस सी है ब्रैकेट्स पे तो मैं यहाँ पर b प्लस सी का कॉलम बनाऊंगी. आफ्टर दैट ऑल ऑफ माई रिक्वायरमेंट इज फिनिश्ड. नाउ आई विल राइट a प्लस बी होल प्लस c एज अ होल इन सेकेंड लास्ट कॉलम. After that, for right hand side, I will write a plus b plus c in the last column. So, putting the values in these columns or in this truth table, you can see that there are three variables a, b and c. a, b और c मेरे पास 3 variables हैं. For 3 variables, I have to use the for writing the number of terms over here. I needs to use the formula 2 raised to power n. n is representing number of variables. अब यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स मेरे पास कितने हैं 3 हैं तो 2 रेज़ टू पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8. सेम इसी तरह हमने पहले भी ट्रुथ टेबल सॉल्व किए हुए हैं. सो यहाँ पर अब मुझे 8 नंबर ऑफ टर्म्स लिखनी है मतलब ट्रू और फॉल्स जो है मुझे 8 लिखने हैं. सबसे पहले एक कॉलम के अंदर मैंने 4 ट्रूज लिखे हैं और 4 फॉल्स लिखे हैं. मैं पहले 4 फॉल्स और बाद में 4 ट्रू भी लिख सकती थी मगर जनरली हम ट्रू वैल्यू पहले लिखते हैं फॉल्स वैल्यू बाद में लिखते हैं. फॉर बी आई हैव रिटन 2 ट्रू हैं 2 फॉल्स 2 ट्रू एंड 2 फॉल्स. इस तरह आपकी 8 नंबर ऑफ टर्म्स कंप्लीट होती हैं. फॉर सी आई हैव रिटन फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स देन ट्रू देन फॉल्स एंड देन सो ऑन. फॉर बी a प्लस बी. नाउ प्लस मीन्स और ऑपरेटर. और में क्या होता है अगर हमारे पास कोई एक इनपुट भी ट्रू आ जाए तो हमारा आंसर ट्रू हो जाता है. a प्लस बी. अब मैं इन दोनों कॉलम्स को देख रही हूँ फर्स्ट और सेकेंड को. a प्लस बी के लिए ट्रू आंसर शुड बी ट्रू. True and false answer should be true because for A I am having a true. Next is true. For both the cases A and B there is written false. That is why I have written false over here. For last case both are false. That is why I have written false over here. Now moving towards B plus C. For B plus C I will take second and third column over here. Both inputs are true, answer is true. Any one of the input is true, your answer should be true. When there are both input false, that is why I have written false over here and so on. Now I will take A plus B, this column and C, this column. अब इन दोनों पर हमने और ऑपरेटर अप्लाई करना है. और ऑपरेटर वही फंक्शन है जो अभी हमने जिस तरह पहले सॉल्व किया. दोनों इनपुट्स ट्रू हैं, आंसर इज ट्रू. एक ट्रू एक फॉल्स, आंसर इज ट्रू. कोई दोनों इनपुट when both the inputs are false then our answer is false and this is for the last case. Here both the inputs are false, that is why our answer is false. For the last case I have written A plus B plus C. अब मैं फर्स्ट कॉलम A का ले रही हूँ और B plus C इस वाले को ले रही हूँ. इनको मैं और कर रही हूँ और ऑपरेटर अप्लाई कर रही हूँ. तो यहाँ पर दोनों इनपुट्स ट्रू, आंसर इज ट्रू. इफ एनीवन इज इनपुट इज ट्रू एज लाइक अदर्स, answer should be true. For the last case you can see over here for A it is also
to false, and for b plus c it is also false. So our last output is false over here. So you can see the answer a plus b plus c. This column is equal to this column. जो आंसर इसका आया वही आंसर इसका आया. So we can say that left hand side is equal to right hand side. Now you will prove the second equation at your home.